divided বিভক্ত হলা কোন মতে অপটিক্স মানে কোন আগে কো তারপরে why optics is divided into two parts why হ্যাঁ প্রথম কোন এটা নাই পছড়া তবে পছড়া কেমন জাগু আউনারি ওটা টিউশন না কই আসিকি সেই যে কেনাল রোড রে বুলুতুবু টিউশন না কই কি তা ক্লাস লাগে 6টা রে 5:40 ঘর বাড়ি কেনাল রোড রে বুলুতুবু हाँ बढ़िया ना अच्छी बार एते लेट ହେଇଗଲା ଆସୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଛୁଟ କି ଭାଇ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ତୁ ତ ବୁଦ୍ଧିଟା ବି ମୋଟା ଦେଖା ଭାଇ study of light is known as optics ये बड़ो study of light is called optics okay so light ro basically two types ro character अछि light सीधा ray हिसाब रे जाई परिबो wave हिसाब रे जाई परिबो so study of light in the form of ray it is called ray optics पुरा तमरो पढाइले study of light in the form of wave is called wave optics study of light in the form of ray is called ray optics study of light in the form of wave is called wave optics हैला कौन सा रे कंसीडर करके कौन कौन लॉ को मानिबो देखो माने आगो बुझो कोन कहूची बोले बुझो जिंसरा कोन डिटेल जिंस को जाई न खाली ऊपर ऊपर पळेला हमें जो टुडे टॉर्च लाइट को किबा लेजर लाइट को केमि जे रे हिसाब रे जाय when a light ray is passing through in the form of ray सीधा सरल रेखा रे जाउची ताकू जेतेबेला हमें स्टडी करिवा ताको हमें रे ऑप्टिक्स बोली कहूचे ता अंडर रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट आगो रिफ्लेक्शन then refraction पड़िथिबो refraction then dispersion पड़िथिबो पड़िछ पड़नो then optical instrument पड़िथिबो these are the basic characteristics of ray of light study of ray of light पड़िथिबो reflection पड़िथिबो law of reflection law of refraction which instrument is follow the reflection properties mirror so mirror is the instrument that follow the properties of reflection माने सबु जहां भी रिफ्लेक्शन होई सबु मिरर कांसेप्ट को लेके प्लेन मिरर हेई पारे कॉनकेव हेई पारे कन्वेक्स हेई पारे all type of mirror or instrument is use the properties of ray or ray of light or study of light in the form of ray we are using or we are dealing in case of mirror and in case of refraction we are entered to lens when we goes to lens or refraction मने पड़नी बोधे किछि कॉनकेव मिरर सार सब एमति करथिबे when a light is incident it will be reflected convex mirror when a light will be incident it will be reflected in a plane mirror when a light will be incident then it will be reflected in case of plane mirror all these things are this is the ray of light so in diagram there are 5 mark questions 4 mark questions for theory 1 mark question for diagram that's why half mark for direction half mark for labeling बुझि पाइला कोन कहिल टोटल लॉन्ग क्वेश्चन ता मने कर तम पाखरे पेले मिरर पडिछि मिरर
मिरर रो कौन से गोटे पचार दबो डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मिरर फार्मूला फॉर ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसिंग रियल इमेज कौन कहूची बुझियला derive the expression of mirror formula what is the mirror formula 1 by b plus 1 by u is equal to 1 by n कहा पाई बाहर करिबा for a concave mirror producing which image real image ताले real image हेले ऑब्जेक्ट कोडे रहइबो सेंटर ऑफ कर्वेचर पछरे रखि देबा then light will incident passing through focus light this is the image this is the real image or you can say center or center in between focus जो रखि परिबो बुझि बसना बुझि बन करथियो तम सा सो क्वेश्चन तुमको सेमती पचारिबनी डिराइव मिरर फार्मूला नो that type of question not be directly arise the question is that derive the expression of mirror formula नले एमती न पचारि के पचारिबो explain the relation between object distance image distance and focal length of a concave mirror for producing real image अन बुझि बार हम कहली object distance image distance और focal length भीतर relation कोन ताकू एक्सप्लेन करो कहा पई गोटे रियल इमेज पई कोउथरे रियल इमेज फॉर्मेशन हो इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर माने से मिरर फार्मूला तो क्वेश्चन पचारला सो दिस इज द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू एंटर इन द सब्जेक्ट यू एंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्लियर देन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए लाइट रे passing through one medium to other medium it is bending towards or bending away according to the nature of the material nature of the medium or material तो सर कोन ता माने आपरा कोन कहउछन हमकु हमरा तो किछ बुझी पारुनु अरे भाई जदी तमे एटा मन करो यू टेक द इट इज ए इंटरफेस इट इज रेयर और मीडियम इट इज डेंसर मीडियम इट इज नॉर्मल लाइट विल रेयर टू डेंसर इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स why it is bending what ask कौन सा क्वेश्चन हां गो तो कहिथिली बोले सीधा ठिया हो वाचू सीधा जीव किछ तो कहया दरकार नै हला when a light ray passing from denser to rarer it is bending away from the normal this is the concept of refraction so the path of light ray will be diverted from its path original path से एक्चुअल आसुतिला देखो एमिति रे पिले से आसुतिला एमिति एटा कोन बे नीलो कलर चलेली कोन हला बे नो actual light ray will be travel like this due to bending of these things it will be bended like this so it will be diverted from its original path when the light will be diverted from its original path that is goes to the concept of refraction so we are dealing with the refraction concept in case of lens concave lens this is convex this is concave you know about bifocal lens discussed sir will discuss the bifocal lens yes bifocal lens means dita misi ki hobo upper part concave convex lower part concave ko mane pinanti why you are using bifocal lenses anyone any idea those people having suffering myopia and hypermetropia समीप दृष्टि दूर दृष्टि you are in odia medium when you are in odia medium standard 10 all these things are myopia and hypermetropia समीप दृष्टि पाख जिंस को देखि पानी दूर जिंस को देखि पारची that is myopia and hypermetropia दूर जिंस को देखि पारची पाख जिंस को देखि पारनी both type of lenses are used convex lens ऊपर जो लागि देखियो गोटे बुढा लोकंकर चश्माटा एमिति थाए गोल चश्माटा एमिति तळे एमिति गोटे गोल हेकि थाए देखिछो तो पिला भी पिंचनी किछि पिला देखिबे भी तळ पार्ट टाइम की थाए दैट पार्ट इज कॉनकेव
that is not convex, that part is concave. देखो जो लोक एमती देखती तार गोटे कौन आखि पाखि जदि थी बुढ़ा लोक टे लोक एमती माने तल आखिरे से देखियो तल लेंस रे that is concave lens बड़ देखा इमेज होला. So this is the bifocal lenses. Bifocal lenses have different type of concept. You know about these things. If a lens is caught here, initially the focal length is 10 centimeter. Now the focal length is how much? कौन हेलो पाठटा कहूँ कौन ये कहीदे पढ़ाई ये कहीदेली पढ़ाई मु कौन करी मुझे कहीदेली. ओके ओके दीदी तुम पाखे ये गोटे कन्वेक्स लेंस अच्छे तुम कहीपर तुम थिन कन्वेक्स लेंस को डीलिंग करना थिक कन्वेक्स लेंस को डीलिंग कर एनीवन एनी आइडिया. यू आर तुम सब पढ़ी आसिल लेंस फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला नेचर ऑफ द इमेज एबे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ुथबो सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव आईपीस पढ़ुथबो सब जिंस कहिथि ऑब्जेक्ट पाखरे ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ छोट सिंपल रे आईपीस फोकल लेंथ बड़. In case of telescope, it will be changed. Focal length of the objective is large, eyepiece is small. Okay, whatever may be the why. All these things. कौन उधर कहती? कहती? हाँ हाँ. तमें जो लेंस सब ड्रॉ करिचो, that is thicker lens or thinner lens? Thinner. Thicker. आई. तो डायग्राम सब एमिति ड्रॉ होइछ, एमिति ड्रॉ होइछ. एमिति. A lens भूल a lens draw करिवनी that is thicker lens is not in your course. ओ सर कौन भाई thicker lens not in your course देखो गोटे जिंस थाए रे पिले एई लेंस रो गोटे थिकनेस अछि t बुझला थिकनेस जदि t रहिबो that was the ray diagram will be deducted by 1 mark. That is the concept behind it. It is dealing with thinner lens not thicker lens. If you are dealing with thicker lens, what is the refraction formula you read in ray optics? Mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 by R. एमती पढ़थिबो कोन न this is the refraction formula. हां ये पढ़थिबो ना refraction formula. If you are not dealing with refraction formula, how you prove the lens maker formula? This is the refraction formula na. If you are not dealing with refraction formula, how you are dealing with lens maker formula? Lens maker formula पढ़थिबो ना सर. Lens maker formula केमती हला पढ़थिबो ना. ओ प्रियंका नहीं होगा दीदी नहीं होगा. Then a thickness t minus 1 is arises. If you are dealing with thick lens, then t minus 1 is term will be arises. T is the thickness of the thin lens. The thick lens of the concave or convex lens. You have no any formula, so thickness will be 0. T plus 1, sorry. Thickness will be 0. So you are dealing with thin convex lens, thin concave lens, not thick. If you are drawing the thick concave lens, then the diagram is completely wrong. You can't get any mark. That is the concept behind it. Okay, leave these things. कौन थिलु कौन कहउदिलु मते कौन पचारथु हम कोन कोन पढैली आज्ञा ओ जुडा लेंस कौन जाननो छी ए भाई तुम कोन तो किछ नै म खाली उडरा जिंस कहि दोछ म मन थिला बोली कहि दोछ क्वेश्चन देखो ले एमिति तुम पाखर गोटे थिन कन्वेक्स लेंस अछि वर्तमान तुम इच्छा है ताको तुम हाणी दबो हाणी केमती दीटा पार्ट रे कन्वर्ट कर देनो. वर्तमान फोकल लेंथ केते चेंज हम को न्यू वर्तमान यार फोकल लेंथ थिला 10 सेंटीमीटर वर्तमान एमानकर फोकल लेंथ केते आबो f1 f2 केते आबो केते आबो फोकल लेंथ 5 नो एनीवन एनी आईडिया करडा कोन focal length not change
If you break it horizontally, focal length is not changed. If you break it vertically, lens को vertically भांगी देली कौन हो? Very good. Focal length will be reduced to half, f by 2. You keep in your mind, OUT in direct question will be arranged in case of lens when the lens will suddenly break. Then what is the object and image? What is the focal length? Direct question will be arranged. 1 to 4 mark question will you get. Okay, leave these things. TIR, any you know about TIR? TIR. Tire. You know about these things? Okay. What is the critical angle? Anyone any idea? है कौन क्रिटिकल एंगल साइन म्यू तो है गोटे पर कौन है क्रिटिकल एंगल कौन पचाली रे भाई गोटे आइडिया रखनो किसी नहीं गोटे पढ़िबा आइडिया रखिबो ना ए जिंस हम पढ़ाई छी ए जिंस सब हम जिबा पढ़ेबो कौन हमरे रे पसंद रे will take more time so whatever you read leave all these things okay कौन कहली way of thinking देखो it is the branch of physics मैं पारिबिनी माने कोन कहलो मु हे भीतर गले बहुत टाइम खाई देबी इन सार सार दिले मु जानि मु 3 मास लागिले गोटे ऑप्टिक्स चैप्टर सारिया पे रे सॉरी ओना एते से तुम पढ़ दो देखो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light it is the branch of physics which deals with the study of light in the form of wave. In the form of wave. हमें लाइट को जेते बेले वेव कंसीडर करके स्टडी करिवा दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स पिले इतरे बेसिकली चारिटा टर्म पढिबो समुदाय हला इमदी सेथरे पढिलो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एतरे सेमदी पढिबो कोन कहले पिले फास्ट पढिबो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हला तमर इजरा जिंस अछि तापरे सिंगल स्टडी एक्सपेरिमेंट डबल स्टडी एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विथ ऑल these things are present in your syllabus whatever basically you are dealing with the concept of interference you are dealing with the concept of diffraction इला इंटरफेरेंस तम डेली लाइफ रे तम झगड़ा फगड़ा होउछ ना तू मो कथा इंटरफेयर करनी बुझि पालु तू मो कथा इंटरफेयर करि परिबो नाही न त मारिबी बुझि पाछ अरे भाई मोर तार कथा वार्ता तू इंटरफेयर करियो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस पूरा सेम जिंस इंटरफेरेंस बुझिला आउ डिफ्रैक्शन तू बेले बेले ए बर्तन पढ़ी पूरा कोन कहलु पूरा पढैछु डिस्ट्रेस हला डिफ्रैक्ट बुझि पाछ किछि ना बुझि पानु तू बर्तन 4-5 घंटा बसी बोल तापर कोन आउ पढिबु ना पढिबुनु कोन भाई पढिबुनु पूरा पढि बोर हे गलु बोर किछ होनी दुनिया रे बोर किछ होई की तू 4-6 घंटा पढिबु तापर कोन बोली मोमो खाई चलियो जीवन ना मोमो खाई की मर जीवन जियो डिफरेंट माने कोन when we are concentrated some things for a certain time मतलब 4-5 घंटा हम concentrate ले the mind cannot exist or cannot tolerate the same thing repeatedly मु फिजिक्स क्लास करबी केतरा क्लास करबी दीटा न तीनटा तापर सब मास्टर जाबे तू माने पत्थर मारियो दीटा क्लास करबी मतलब मैक्सिमम तीनटा आउ तो नहीं को भाई मु याडा कहू तियार कोन नो जिरडा खाली चंदन चिता खाली मारी पकाए जुड़े जुड़े तीनटा अरे भाई मु याडा बुझो छी तियार कोन हो बैटरी भी ढीला तो hela so diffraction is that when a light ray will be
incident or pass through a medium, it will be bending away from that medium. What is sir कौन ଗୋଟେ practical example you take the example of torch light. हम घरे सब थब आज काली आलुओ एटा गोटे सुइच अछि तमे सुइच को ऑन कर देलो टॉर्च लाइट को हबो बंद होई जीवो कोन हबो आउ ऑन हबो ऑन ले कोन हबो लाइट केमि पड़िबो शेड पड़िबो इन लाइट मार जे छाई जो लाइट जाई तळ ऊपर पड़ुनी हां the light will be bending like this. Actual the geometrical region एमिति but light will be bending like this. This is concept of diffraction. माने that will be distressed, breaking through. बुझेला we are dealing with the basically interference and diffraction, and something will be present in your syllabus, but in this year you are the maybe बोधे से जो ये syllabus कौन पूर्व वर्ष जो syllabus जो थिला कटिला पर जो syllabus वो syllabus आरंभ कर अछि मते हम तो उचे सर प्रिंट लेखा आगड के वेव फ्रंट ओटा बढ़िया जिंस पढिबा वेव फ्रंट कहि दबा वेव फ्रंट कोन वेव फ्रंट अरे पिले वेव फ्रंट माने कोन इटा को भांगी दियो वेव रो फ्रंट माने कोन आ वेव रो गोटे बैक अछि बैक त नै अपनी वेव फ्रंट कोन आइतला बहि कहिलो तू मते पूजा डी सिखे देबू ओम भूर्भुवः स्वः तथैव वच जा मु सिखिनि बे तू मते सिखे देबू ए जो गणेश पूजा सब बिड़ा बुड़ी होचंदी मु पूजा कर 200 संग से 10 मिनिट रो 200 500 10 मिनिट रे तू मते ऑनलाइन 2-3 क्लास नहीं रविवार मॉर्निंग रे केते गोटे फाका आमी ए 9टा 10टा कर फाका तो ट्यूशन तू मते नहीं जा गोटे क्लास ऑनलाइन कर नहीं गले मु खाली सिखि गल तो मंत्र हैला हो और पैसा पदी नाली गामछा को हरदिया ये पिंदे की बुली भी हो ए देखो एबे देखो रे पिले एई जगह मन कर पिले गोटे सोर्स अछि सोर्स अब सर सोर्स कोन यू टेक द एग्जांपल ऑफ टॉर्च लाइट्स एई जो बल्ब के एग्जांपल लियो सेठू गोटे वेव बार ना नंबर ऑफ वेव बार चला ये पिले क्रेस्ट ये कौन टॉप ये कौन क्रेस्ट ये कौन टॉप कौन रख पिले ए क्रेस्ट फेज एंगल समान एम्पलीट्यूड भी समान फेज एंगल कौन न मन कर गोटे वेव एमती जाउची रे पिले एटा कौन छ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कौन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन माने कौन एई डायरेक्शन ने वेव ता प्रोपागेट होउची ताकू देखिया पई हमको गोटे वेक्टर दरकार जाना हैला के वेक्टर कौन प्रोपागेशन वेक्टर माने वेव ता को डायरेक्शन ने प्रोपागेट होउची ता प्रोपागेशन को देखिया पई हमको गोटे वेक्टर दरकार वेक्टर कोन तार डायरेक्शन अछि सेडा ताकू कह जाय डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन सहित वेव जेतिक डिग्री एंगल कला इनिशियली दैट इज कॉल्ड फेज एंगल फाई अब कोन कह जाय फेज एंगल कह जाय बुझियला द एंगल मेक बाय द वेव with the direction of propagation सहित वेव जेतिक डिग्री एंगल कला तो सर एई जगह भी हबो एई जगह भी हबो वेव एंगल तो सर एई जगह हबो एई जगह वेव हला जेतिक डिग्री एंगल कला दैट इज कॉल्ड इट्स फेज एंगल कोन फेज एंगल बुझियला फेज एंगल कोन बुझियला डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के ता फार्मूला उड अछि प्ले 2 पाई बाय लैम्डा ता फार्मूला कोन 2 पाई बाय लैम्डा ये देखो ए माने समान फेज एंगल ले वाइब्रेट होउछ तो सर केमिति और प्रैक्टिकल एग्जांपल दियंतु
ଇଏ ଯେତିକି ଫେଜ ରେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବ ଇଏ ସେତିକି ଫେଜ ରେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବ ଇଏ ସେତିକି ଫେଜ ରେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବ ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମତେ କହିଲ ବିଲେ ଧୀରେ 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 ୱେଭ ର ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ କମି କମି ଯିବ ନା ବଢି ବଢି ଯିବ କମି କମି ଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମତେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାର୍ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୱେଭ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ୱିଲ୍ ବି ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ୱେଭ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ବଢି ଯାଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିନୁ ଦେଖିବା ଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଯିବ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଛୁ କି ଲୋ ତତ ଶୁଭୁନି କାଲୁଣି ଅନ୍ଧୁଣି ଦିଟା ଯାକ ତଳ ସାଉଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ପାଣି ଅଛି ଟେକାଟା ପକେଇବ କଣ ହୁଏ ରିଙ୍ଗ 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 ଏକ୍ସାଇଟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଟେକାଟା ପକେଇବ ଦେଖ ସେଇ ଜାଗାରେ ବଡ ରିଙ୍ଗ ହବ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ପାଣିଟା ଉଠିକି ହବ ତାପରେ ପାଣି ଉଠିବାଟା କମିଯିବ ତାପରେ ପାଣି ଉଠିବାଟା ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣିଟା ପୁରା ଫ୍ଲାଟ ହେଇଯାଏ ଦେଖିନ ନା ଏମିତି ଦେଖିନ ଏମିତି ସର୍କଲ କାହିଁ ହେଲା ସର୍କଲ ହୁଏ ଦେଖିଛ ତ ପକେଇଦେଲେ ସର୍କଲ ହଉନି ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ହୁଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ହୁଏ ପୁଣି ଏମିତି ସର୍କଲ ହେଇ 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 ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ନଥିଲେ ସେ ଫ୍ଲାଟ ହେଇଯାଏ ସର୍କଲ କାହିଁ ହେଲା ଏନି ୱାନ୍ ଏନି ଆଇଡିଆ that is the wave front ମାନେ ଏଇ ଦେଖ ଯୋଉ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା କୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ସମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ହବ କି ରେ ସର୍କଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ହବ କି ରେ ସର୍କଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତିନିଟା ୱେଭ ଦେଖିଲି ନା ପୁଣି ଏପଟେ ହବ ସବୁ ପଟେ ହଉଥିବ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ୱେଭ ବାହାରିବ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ବାହାରିବ ରେ ପିଲେ ମନେକର ଫାଷ୍ଟ କ୍ରେଷ୍ଟ ନଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କ୍ରେଷ୍ଟ ନବା ସବୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରେଷ୍ଟ ର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ସମାନ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦବା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି କି ବୁଝିଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ଗୁର 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 ଏମିତି ଗୋଲ 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 ଆସେ ତ ସାର୍ କେମିତି ଆସିଲା ସବୁ ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା କୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ସମାନ ଏଇ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଲଗା ହବ ବୁଝିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବଡ ୱେଭ ହବ ତାପରେ ଛୋଟ ୱେଭ ହବ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ ନା ସମାନ ହବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ସମାନ ହବ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ସମାନ ହବ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟ୍ରପ ର ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ସମାନ ହବ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦ ଲୋକସ ଅଫ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ଅଲ ଦ ପଏଣ୍ଟସ which are vibrating in the same phase ଏମାନେ ସମାନ ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବେ ଏମାନେ ସେମ ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରି ଭାଇବ୍ରେଟ ମାନେ କଣ ମୁଭ କରିକି ଆକୁ ଆକୁ ଯିବେ this joint to form a କଣ wave front କଣ ଦବ wave front ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡିଟେଲ ଯିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆଗ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ଚାଲ କାରଣ ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଚାପ୍ଟର ଥିଲେ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ଭେରି କନସେପଚୁଆଲ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ବୁଝିଲେ ଏଇଠୁ ବୁଝି ହବନି ଇଏ କଣ ହାଇଜେନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ସିଧା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ଲେଖିଦିଅ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଣ ଦ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ଲୋକସ ଅଫ ଅଲ ଦ ପଏଣ୍ଟସ Hello. The collection of locus of all the points which are vibrating in the same phase which are vibrating in the same phase ହେଲା ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ସମାନ ଫେଜ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରୁଥିବେ ବୁଝିଲା the collection of locus of all the points which are vibrating in the same phase ହେଲା to produce a wave front
to produce a wave front. Produce टे कौन wave front. गोटे wave front तैयारी करियो. पिले मने रखी था गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट जदि नबा को पॉइंट को ऑब्जेक्ट नबा पॉइंट ऑब्जेक्ट आमे गोटे बॉल टे नबा लाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट नेले वेव सबुआडे हम ना गोटे आडे हम सबुआडे हम आमे समस्त जदि जॉइंट कर दबा ये गोटे वेव फ्रंट ये गोटे वेव फ्रंट पिले ये को टाइप रो वेव फ्रंट ला सर्कुलर वेव फ्रंट शॉर्ट क्वेश्चन पचारे एडा एडा को टाइप रो वेव फ्रंट सर्कुलर वेव फ्रंट त माने पॉइंट ऑब्जेक्ट गिव सर्कुलर वेव फ्रंट आ गुड देखो गोटे स्ट्रेट ऑब्जेक्ट नबा बार लाइट नियो बार लाइट गोटे स्ट्रेट ऑब्जेक्ट सबआडे वेव बारिबो सबआडे वेव बारिबो ना गोटाडे बारिबो सबआडे बारिबो एमानो को जॉइंट करिवा ना को वेव फ्रंट किदे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बुझिला स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हेले सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ओडा स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हेले पिले ओडा लाइट रे सन रु लाइट रे आसुची सन रु लाइट रे तो आसिला एमिति आसिला कोन गोटे लाइट रे आसे कि इनफिनिट नंबर ऑफ लाइट रे आसुची लॉन्ग डिस्टेंस जो लाइट रे आसिला जदि हमें सेमानो को जॉइंट करिवारे पिले गोटे प्लेन वेव फ्रंट हबो को वेव फ्रंट हबो प्लेन वेव फ्रंट मने रखिथिबो ए तीनटा वेराइटी रो वेव फ्रंट क्वेश्चन ने पचारे व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम इनफिनिटी हला स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हेले को वेव फ्रंट तयारी हबो सिलिंड्रिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट हेले को वेव फ्रंट तयारी हबो सर्कुलर हला आउ इनफिनिट लाइट आसले को वेव फ्रंट तयारी हबो प्लेन तीनटा जाक ड्रा कर दीज आर द थ्री वेराइटी ऑफ वेव फ्रंट आउ तमरो वेव फ्रंट रो वेराइटी किछ नाही सुनो या पर एग्जाम और आठवां एग्जाम sorry